जल्दी निकल। जल्दी पकड़। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। जब मैं इस दुनिया में नहीं था और शुराई से आ गया था, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के पेट में था। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम माई मदर वॉज नॉट वेरी हेल्दी और उनको जॉन्डिस भी हो गया था। डॉक्टर ने तो एक वक्त पे मेरे डैड से ये कह दिया था कि शर्मा जी, वी कैन आइदर सेव द चाइल्ड और द मदर। और 99% हस्बैंड की तरह मेरे डैड ने यह कहा कि माँ को बचाओ प्लीज। और हर माँ की तरह मेरी माँ ने यह कहा बच्चे को बचाओ। एट दैट मोमेंट माई मॉम वॉज 6 months प्रेगनेंट और इस दौरान मेरे डैड ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मेरी मॉम हेल्दी रहे। इनफैक्ट उन्होंने एवरी फ्राइडे हाजी अली दरगाह जाना भी शुरू कर दिया। चमत्कारी रूप से मैं और मेरी माँ दोनों बच गए और कुछ इस तरह मेरी स्टोरी इस दुनिया में स्टार्ट हुई। नाउ बीइंग बोर्न इन अ पंजाबी फैमिली, जहाँ मेरी फैमिली में अब तक ज्यादा करके लड़कियां ही पैदा हुई थी, इट वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम। नाउ लेट मी डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ माई मॉम एंड डैड बिफोर आई कंटिन्यू। माई फादर वॉज 5 feet 10 inch, an average looking man with dark brown skin, and my mom is 5 feet 9 inch, very fair woman. अब जो मेरा रंग था वो मेरी मॉम पे गया था, यानी कि फेयर, एक्सट्रीमली फेयर। नाउ लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी। एक बार क्या हुआ, मेरे दादाजी मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके चले गए थे एंड आई वाज अ वेरी क्रैंकी किड हु यूज्ड टू क्राई ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। So while my grandfather took me out, I was still crying and he was caught by a local policeman because they thought I was kidnapped by my own grandfather. Can you believe it? Later on, my family discovered that the only way to stop me from crying was to make me listen to radio, Hindi songs. और यही देखकर मेरी दादी ने मेरे डैड को मुस्कुराते हुए कहा, अनिल, तेरा बेटा भी तेरी तरह फिल्मी ही बनेगा। एंड ओ, डिड आई मेंशन व्हाट माय फादर यूज्ड टू डू? ही वाज अ मैनेजर एट अ मूवी थिएटर इन कांजूरमार्ग, लेटर ओनर। एंड माइंड यू, उस वक्त मिस्टर अमिताभ बच्चन ने काफी कमा कर दिया था पूरी इंडस्ट्री के लोगों को। सो माय डैड वाज काइंड ऑफ अ वेल टू डू मैन एंड आई हैड प्रूव टू बी अ गुड लक चार्म फॉर हिम। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट माई लिटिल सिस्टर वॉज ऑल्सो बॉर्न। लेकिन फिर एक दिन गुस्से में आकर मेरे डैड ने मेरे दादा दादी का घर छोड़ दिया। और जिस वक्त मेरे डैड ने डिसीजन लिया, मैं, मेरी बहन और मेरी मॉम अलीगढ़ में थे मेरे नानी के घर। और गुस्से में आकर मेरे डैड ने मेरी मॉम को फ़ोन करके पूछा, सितारा, मैंने घर छोड़ दिया है, तूने कितने पैसे बचाए हैं? मुझे अभी के अभी नया घर लेना है। जैसे तैसे करके with all the money that my mom saved, we bought a first 1-room kitchen house in Powai, and within a year my dad bought the house in which I currently lived, or should I say my office. While I was growing up, I was very close to my grandfather. I used to always put bandage all over my hands and forehead just to look cool and strong, and my grandfather did not mind. In fact, he used to play with me all the time. When I was 4, my grandfather passed away due to stomach ulcer. I remember at one stage my father told the doctor, take all the money you want, just save my father. My grandfather turned to my father and said, मुझ पे इतना पैसा खर्च मत कर, अब अपनी जिंदगी बना. And after this, in few days, he passed away. I was there in the hospital when my grandfather shut his eyes for the last time. I saw my father crying for the first time ever, but I was too small to understand what was going on. ये तो बात हो गई मेरे बचपन की. Let's fast forward into when I was a teenager. 5th standard में फेल हुआ, 8th स्टैंडर्ड में फेल होते होते रह गया और 10th और 12th में जस्ट पास हुआ. इसके बाद मेरी लाइफ में 2 बड़ी ट्रेजेडी हुई. पहली कि माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे एंड दूसरी कि माई फादर हैड अ बिग फाइनेंशियल लॉस बिकॉज हिज फ्रेंड स्कैम्ड हिम इनटू अ बिग बिजनेस. और इसके बाद जो मेरे डैड ने एक बात मेरे दिमाग में घुसाई, वो ये, धंधे में कोई यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा. 12th स्टैंडर्ड के बाद जैसे हर बच्चा कंफ्यूज होता है, उसी तरह मैं भी कंफ्यूज था. क्या करूं? और जैसे कि उन दिनों में हर बच्चा सेलेक्ट कर रहा था, मैंने भी होटल मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया. और बॉस, क्या पछताया हूं मैं वो लेकर. होटल मैनेजमेंट के पहले ही साल में जो मैंने बात अच्छी तरह से सीख ली थी, वो थी हॉस्पिटैलिटी. सेकेंड ईयर में आते आते मेरा वाइस प्रेसिडेंट से हो गया था झगड़ा और फेल होने के 100% आसार दिख रहे थे. नाउ लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग. हाँ, बाय दैट टाइम मुझे पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया था और मैं खूब मन लगा के पढ़ाई भी करता था. बट मैं उस वक्त लाइफ से काफ़ी डिप्रेस था. ऑनेस्टली स्पीकिंग,
पता नहीं क्यों, और उसका असर मेरी पढ़ाई पे डायरेक्टली हो रहा था। अब ये सारे कंफ्यूजन के बीच एक अच्छी बात ये हुई कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी, और कमाल की बात तो ये थी कि वो मेरा 10th स्टैंडर्ड का क्रश थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा आया कि हमारा ब्रेक ऑफ हो गया, और डिप्रेशन की कुकर की जो सीटी थी ना, वो उड़ गई। आई वॉज सैड, I was really very sad. During that phase, I got an opportunity to give interview for Jet Airways and Qatar Airways for cabin crew back to back. It was my first and second interview of my life. I was just 18 and a half years old boy giving the interview very casually. And guess what? I nailed it. Both the interviews, I nailed it. Can you believe it? Even I could not. अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं जेट एयरवेज या कतर एयरवेज में से एक चूज करूं, या फिर अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करूं। एंड फॉर द रिस्की डिसीजन मेकर आई वाज एंड आई स्टिल एम, आई डिसाइडेड टू चूज द जॉब ओवर माई स्टडीज, एंड ऑब्वियसली आई वेंट फॉर कतर एयरवेज। 5th May 2007, I joined Qatar Airways as a cabin crew, and boy oh boy, it changed my entire life. I was there for 6 long years. 6 साल, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा और किसी किसी के लिए बहुत कम। क्या नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में उधर। दुनिया घूमा, अलग अलग कंट्री से शॉपिंग की, भाई जैसा दोस्त बनाया रिजवान, खूब पैसे कमाए, जिससे मुंबई में मैंने खुद का घर लिया। कैमरे का तो शौक था ही, और ट्रैवलिंग करते करते वो प्यार 7वें आसमान पे चढ़ गया था, इतना कि मैंने कैमरे से बात करना शुरू कर दिया था, जिसे आज लोग व्लॉगिंग कहते हैं। उस वक्त इस बारे में मुझे नहीं पता था। As I completed a month in Qatar Airways, I patched up with the same girl I broke up with in Mumbai. Did I tell you about her? She belonged to an extremely rich family and rest everything opposite to me, which I don't want to highlight that. After 2 years of long distance relationship, we broke off again, and this time for good. और ब्रेकअप भी क्या था यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था कि मैडम ने मुझे अपने पापा से शादी की बात करने के लिए फोर्स भी कर दिया था। लड़की के बाप ने तो ऑन द स्पॉट ही मना कर दिया था रिलीजन इशू की वजह से, और लड़की तो दूसरे दिन ही पलटी मार गई, बोलती कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट इसके दूसरे हफ्ते बाद ही उसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी। आई वाज लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड इन माय लाइफ, बट देन आई मूव्ड ऑन वेरी क्विकली, क्योंकि इंसान को प्यार से मतलब है, किससे मिले उससे मतलब नहीं। I dated 7 girls after that, all Indians by the way. किसी से भी बात नहीं बनी, और उसके बाद एक लड़की ने मेरे लाइफ में एंट्री की। ऐसा लगा शी इज़ द वन फॉर लाइफ। वी डेटेड फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अब कतार में भी 6 साल हो गए थे, और मुझे लाइफ टाइम ये जॉब नहीं करनी थी, लेकिन मेरे डैड ये चाहते थे कि मैं वहीं काम करूं, क्योंकि इंडिया में रहकर तो मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता ना। पर मुझे तो इंडिया ही आना था ना। सो जस्ट टू टेस्ट माई लक, आई टुक अ लॉन्ग वेकेशन फ्रॉम कतर एयरवेज एंड केम होम टू सी व्हाट एल्स आई कैन डू इफ आई क्विट माई जॉब। इस बीच कुछ इन्वेस्टमेंट्स ट्राई किए, बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, और डैड की बात सच हुई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब सब कुछ तय था, कतर एयरवेज वापस चला जाऊंगा और उस लड़की से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। यहाँ तक कि घर में बात भी होना शुरू हो गई थी। 26 दिसंबर 2013, 10 दिन बाद मेरी फ्लाइट है कतर एयरवेज वापस जाने के लिए। घर में सब काफ़ी खुश हैं, बेसिकली ऑल वॉज गुड। एंड देन 27 दिसंबर 2013, सुबह के 5:10, I was sleeping next to my father. I heard a loud snoring noise from him, which was very unusual. It sounded like snoring, but it was not snoring. I honestly cannot explain. I tried to wake him up and ask him what happened, and there was no response. I immediately got up, went to his side, and tried shaking him really hard to get his attention, as he wasn't reacting even a bit. I started screaming, "Daddy, utho!" That even my mom and sister came to the room. Because I was trained for first aid in Qatar Airways and had a couple of medical emergencies in flight, I started following my drills. First thing, check the breathing and pulse. There was none. Second thing, check the mouth if anything is causing blockage in breathing. There was nothing. I immediately understood that it's a heart attack. And while my mother screams my father's name, "Anil, Anil, Anil," the realization hit me so hard that I almost fainted. I held on to myself, got my senses back, and somehow took him to the hospital with the help of my neighbors. It was a death on arrival case, but doctors still did their best. After half an hour of trying, they gave up at 6 a.m. And for the world, Anil Sharma passed away on 27 December 2013. I quickly made a decision of not going to Qatar and taking charge of my father's business. दुनिया कितनी सेल्फिश हो सकती है, ये मैंने डैड के जाने के बाद समझ लिया।
रिश्तेदार रिश्ता नहीं रखते, दोस्तों की दोस्ती दोस्ती नहीं लगती, और हर कोई आपसे एक ही चीज़ चाहता है, और वो है फ़ायदा. My father was an extremely healthy man, and his death shook everyone, and especially my mother. She cried every day for 3 months after my father passed away. Things started to get back on track after a couple of months. I was doing good in my father's business, did a couple of TV shows, few print shoots. It's because I always loved the camera. I remember one night I was getting so bored in the office that I was watching YouTube and I saw a couple of guys making videos riding a motorcycle and talking. I immediately thought of doing the same. You can say that's how my YouTube journey began. यहाँ एक नया सफ़र शुरू हुआ और वहाँ एक पुराना सफ़र ख़त्म हुआ. I broke off with the girl I was about to marry. For some reason, it was over. I moved on. अब शुरू हुई ठीक से मेरी YouTube की जर्नी. जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी उसे लोग मोटो व्लॉगिंग कहते थे, क्योंकि हम बाइक पे बैठ के बाइक के बारे में ही बात करते थे. Now due to lack of knowledge in motorcycles, I used to talk more about my life than motorcycles, which was criticized by a lot of people, including the motor vloggers in the group which I was. One fine day, I had a big fight with almost all the members in the group, so I decided to leave that group and go my own way. The first long ride video I made soon after that was Mumbai, Ajmer, Delhi, Mumbai. Getting 10,000 views in less than a month itself and making me cross 10,000 subscribers, that changed my life forever. No, wait. It was that comment on my Facebook page of that shared video which changed my life. And that comment was, "You are the Casey Neistat of India." When I read the comment, I was like, who's that? And I searched him on YouTube and I couldn't believe what I just saw. This guy was making videos about his life exactly the way I was making videos about my life in Qatar. The only difference was he was saving the videos and uploading on YouTube. I never did that. And now I know what I want to do. So I focused more on lifestyle videos, but then my life was more about travel, and my first travel videos which changed my life forever on YouTube was the Ladakh journey. There was no looking back after that. I want to clarify one thing. It was not the travel videos that changed my life. It was the way I connected to you guys that changed it. With all the support and love I got from my audience, I was heading towards 100k subscribers through my lifestyle vlogs, which obviously included more of traveling. But I wanted to do something more, share more, talk more, create more, express more. But how? And then came FanFest 2017. YouTube wanted me to be on the stage. सच कहूँ तो ये सब सपना लग रहा था, क्योंकि I had gone for FanFest 2016 and I knew the importance of this. This was my chance. This was my answer to the how. How can I change my life on YouTube? By this time, I wanted to make vlogging popular in India, and I knew I could not do that by just riding a motorcycle. It's the change which changes everything in your life. So I changed. I experimented. I took risk. I took chances. My thumbnail was changed. My titling was changed. All of it now focused on Nikhil Sharma, whom you guys know as Mumbai Ka Nikhil. What I eat, what I like, what I dislike, who are my friends, what are my interests. I focused on everything beside the negativity. I never focused on people who hate me, hate videos, hate comments. That's just a useless thing. Hate makes you weak. But in my case, hate made me stronger than ever. So for all my haters, thank you very much for pushing me towards success. But it's not the haters to whom I owe my success. It's you, my lovely subscribers, who always supported me, loved me, and appreciated my work. यार दिल से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग नहीं होते ना तो मुंबई का निखिल नहीं होता. So you guys wanted to see more and I showed you more. But it's not just the good things about my life. I also shared the bad side about my life. My anger issues, my ego issues, how bad I get sometimes. But all I got from you guys was love. Now this was about how my channel grew and I grew. But success does not come from growth alone. It also comes from money. So here I was working hard and giving my all in my vlogs, and surprisingly I started getting offers from brands, and obviously they were paying me. But you know what? I could never lie to you guys, and sometimes brands want you to do that. So I lost a lot of deals with many brands.
but I never cared. But today I'm successful, I'm rich, and I work with a lot of brands, and I only promote good brands because I know you guys love me a lot, and I can never take advantage of that. A lot of you guys tell me that you are addicted to my vlogs, but the truth is I am addicted to share my life with you guys. So I started daily vlogs. Well, almost. लेकिन एक चीज़ अश्योर करता हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. देखते ही देखते 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस हो गए, जो कि एक वक्त पे सिर्फ एक सपना था. ऑल थैंक्स टू यू गाइस. सो दैट इज प्रीटी मच व्हाट हैपेंड फ्रॉम डे 1 ऑफ माई लाइफ टिल डेट. Now you know everything, and I literally mean everything about Nikhil Sharma, the boy behind Mumbai Ka Nikhil. I hope you enjoyed this video, and if you did, don't forget to like, comment and share zarur karna, and a big thumbs up shout out for Varsha. Your Instagram ID? Whatever. WHARTEVER. WHARTEVER. Follow her, and if you need any work from her, को DM करो. They did all the sketching वाला part. अभी मेरी handwriting और drawing तो इतनी अच्छी नहीं है, so I took the help from these guys. Thanक you guys. और कुछ हमारे बारे में तुम्हारे बारे में क्या बोलना? सब कुछ तो मालूम है उन लोगों को. इंजीनियर लौंडा, पाकू, मैनेजर और ये प्राजक्ता का प्यार. सॉरी, शिवरिंग और जो बाकी जिसके बारे में जानना है वो फ्यूचर में तुम लोग जान लोगे. कंटेंट है यार, सब कुछ तो नहीं डाल सकता ना. With that said guys, thank you for watching this video. As always, shukran, alvida, masalama, take care and do whatever you want. I love you friends. Bye. Follow her. Bye bye. Happy birthday, dear Nikhil. लगा तू भी पापा साफ करेगा. अरे रोस्टर लगा ना तू भी. अरे रोस्टर लगा, रोस्टर. चेहरे पे चेहरा है, पर्दे पे पर्दा है, दुनिया में समझा है कौन.